हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 1 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग शो पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें जो है आपका आंसर है दैट इज फिजिलिया, ट्रिपेनोसोमा एंड टर्माइट, ऑल दीज शो पॉलीमॉर्फिज्म। बट सम टाइम हमसे पूछा जाता है लाइक फिजिलिया ये ज़ोइड पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ट्रिपेनोसोमा मॉर्फोलॉजिकल पॉलीमॉर्फिज्म, टर्माइट शो कास्ट पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फाइलम इज द बॉडी सेगमेंटेड। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें बॉडी सेगमेंट होते हैं। तो आपने एनालिट्स देखा होगा, अर्थवर्म, तो उसमें क्या होता है, बॉडी सेगमेंटेशन होता है। Like here, annelids like earthworm leeches have a segmented body. The segmentation is both internal and external. Now, which of following is a oviparous animal? Oviparous आपको पता होना चाहिए। oviparous मतलब विचले एग, जो एग ले करेगा उसको हम बोलेंगे कि इट इज oviparous। तो oviparous कौन सा है? ऑर्निथो राइनकस जो है, दैट इज जिसको हम प्लेटिपस भी बोलते हैं, इज एनिमल, इज अ मैमल दैट lay egg instead of giving birth to young one. तो that is the oviparous. Now, which of following is a flightless bird? तो ostrich, जिसको हम स्ट्रूथियो भी बोलते हैं, is the largest flightless bird है। इसके स्मॉल, अगर आपने देखा होगा तो स्मॉल विंग्स होते हैं, लार्ज लेग्स होते हैं, एंड अगर ostrich देखा होगा तो बहुत तेज रन करता है ये। ओके, रैपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी। रैपलम कहाँ पे प्रेजेंट? तो ब्रासिकेसी फैमिली का फीचर है एंड इन मस्टर्ड। ओके, बाकी रवि में देखो आप, लेमन है, पी है, सनफ्लावर है, इनमें रैपलम नहीं होता है। मेनली ये आपका ब्रासिकेसी फैमिली का फीचर है। पेरिडोम इज फॉर्म्ड बाय, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। पेरिडोम अगर आपसे पूछा जाता है ये, तो इसमें अकेला आपका फेलोजन आंसर भी हो सकता है। द रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो फेलोजन है, ये जो फेलोजन है जिसको हम कॉर्क कैम्बियम भी है, ये डिफरेंशिएट होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है दैट टाइम। तो ये बनाता है हमारा फैलम, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, जो कि आउटसाइड की तरफ होता है, एंड फेलोडम जो कि इनवर्ड होगा, जिसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो फेलोजन शुड बी आंसर, बट सम टाइम हम देखते हैं कि फैलम, फेलोजन, फेलोडम बोल देते हैं कि पेरिडम कैसे। तो इन तीनों लेयर से मिलकर जो है हमें पेरिडम बनता है। ओके, द नेक्स्ट एपिब्लम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इंपॉर्टेंट, एपिब्लम एक्चुअली इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, एंड मोस्टली एपिब्लम जो है ये दोनों में ही होता है, आपका मोनोकोट रूट एज वेल एज डाइकोट रूट, नॉट ओनली द डाइकोट रूट्स, इट्स both characteristic. Okay, epiblum, also known as a piliferous layer, is the outermost layer of a root. It replaces the epidermis in root, found in both monocote and dicot, जैसे मैंने बोला, replace epidermis in young root and help in absorption. तो epiblum में जनरली हम बोल देते हैं कि absorption में ही हेल्प करता है, ठीक है, एंड ये दोनों में प्रेजेंट होता है। जूट फाइबर इज obtained from, तो it is obtained from secondary phloem, इसको जूट फाइबर और बास्ट फाइबर भी बोल देते हैं हम। सेकेंडरी phloem से जो है ये डिराइव किया जाता है। mast cell secrete, तो this is important, mast cell secrete histamine, heparin and serotonin. कंपाउंड आइस आर फाउंड इन द, दिस इज इन कॉकरोच। ओके, ओमेटिड्स में जो है ये कंपाउंड आइस होती हैं, ग्लाइसिन है। सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, तो सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द वायरसेस। सेल थ्योरी जो है, बोलते हैं, सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल। वायरस जो है उसको हम एसेलुलर बोल देते हैं बिकॉज दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी एंड कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। द एंजाइम दैट कट डीएनए, अब आपके डीएनए है सपोज, ओके, इसको हमने कट करना है, वी वांट टू कट इट, देन व्हाट, हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, एंजाइम दैट कट द डीएनए फ्रॉम पर्टिकुलर साइट। ओके, मतलब स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस जहां होंगे वहीं से ये कट करेगा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये यूज होता है। और प्लांट सेल अटेन टर्जिडिटी, प्लांट जो है वो टर्जिडिटी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब व्हेन वेट वाटर जो है एंटर करेगा तो एंडोऑस्मोसिस सेल अटेन टर्जिड हो जाता है, ठीक है। जब सपोज दिस देयर इज वाटर, एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर अंदर की तरफ जा रहा है, ओके, तो हम बोलते हैं कि एंडोऑस्मोसिस है। मैंने प्लांट सेल इन प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर एंटर इनटू द सेल। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक, when a cell placed in a hypotonic solution, water enter the cell by endosmosis, causing the vacuole to swell. This creates a turgor pressure, making the cell turgid, क्योंकि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। द फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग ट्रांसपिरेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा, बट अगर स्टोमेटा ऑप्शन में नहीं दिया है तो सेकंड आंसर विल बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, थर्ड विल बी द टेंपरेचर। ओके, बोरोन इज अ, बोरोन इन ग्रीन प्लांट असिस्ट इन, तो बोरोन का जो मेन है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक अ फ्लावर के केस में आप देखोगे वहां पे जो है हमें बोरोन की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय स्यूडोमोनास Tylobacillus are denitrifying bacteria that convert nitrate to nitrogen gas. Okay, completing the nitrogen cycle in anaerobic bacteria. Thus complete. Cranch anatomy is observed in, cranch anatomy किसमें observe की गई है? C for plant में। Which of following is a form during photorespiration? तो अगर photorespiration की पूरी साइकिल देखते हैं तो उसमें देखेंगे phosphoglycolate is formed during the photorespiration. A toxic byproduct when rubisco bind with the oxygen instead of a CO2, especially under high temperature or low
कार्बन डाइऑक्साइड जब हाई टेम्परेचर है, हाई ऑक्सीजन है, तो इन दैट केस जब रूबिस को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो फोटो रेस्पिरेशन जो है प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइट जो है वो बनता है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। The essential element needed for the water splitting in photosynthesis leading to oxygen evolution in magnesium. The site of glycolysis is cytoplasm. Glycolysis cytoplasm होता है, you know glycolysis. Glycolysis is breakdown of a glucose into pyruvic acid so that they can produce ATP and NADH. So this is कहाँ होता है glycolysis? Cytoplasm में. Induction of flowering plant by a low temperature. This is very important. Vernalization. Low temperature में जो flowering हो रही है या हम जो low temperature दे रहे हैं उसको vernalization बोलते हैं. Gibberellin was discovered from. So it was the fungi Gibberella fusiforide that cause ophirish seedling disease. तो उससे Gibberellin जो है वो discover हुआ था. Cholecystokinin in human being stimulates gallbladder. Okay. जो cholecystokinin है, these are hormones secreted by a small intestine in response to a fat, stimulate conduction of gallbladder, release bile. तो मेन है ये जो है ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा. ओके, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा और गॉल ब्लैडर जो है आपका बाइल सीक्रेट करेगा. सिंपल. That key has stimulate pancreas to release digestive enzyme. Main action on gallbladder. Among mammals, a significant role of digestion of milk is played by option सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ मिल्क. तो ये पता होना चाहिए. रैनम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मेनली इन्फेंट में होता है एंड हेल्प कोगुलेट मिल्क. इन्वर्टेज का क्या काम है? ब्रेक डाउन सुक्रोज, अमाइलेज, स्टार्च डाइजेशन. और रैनम का जो है रोल है इन डाइजेशन ऑफ मिल्क. Place in capsule in human being is associated with, so it is associated with liver. Here is the option. Okay. The next, the alveoli of lungs in human being are lined with, this is the alveoli की जो लाइनिंग है और दी वॉल जो है उसको that is lined by a squamous epithelium. Okay. And next is lymphoid tissue in human is found in lymphoid tissues होते हैं that is thymus, tonsil, इसको हम lymph tissues बोलते हैं, lymph nodes. So all these all are the lymphoid tissue. Erythropoietin in human is secreted from, erythropoietin very important, it is secreted from kidney. Okay, actually erythropoietin stimulate RBC की production and is secreted in the kidney in response to low oxygen level. So जब ऑक्सीजन का लेवल लो होगा तो वहाँ पे erythropoietin जो है वो स्टिमुलेट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा RBC की प्रोडक्शन हो. So that because you know RBC का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना. So अगर RBC की लो ऑक्सीजन लेवल है तो क्या होगा, हमें RBC की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये स्टिमुलेट करता है RBC की प्रोडक्शन. येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द, तो येलो कलर जो होता है दैट इज ड्यू टू द यूरोक्रोम पिगमेंट. यूरोक्रोम इज अ पिगमेंट दैट गिव अ येलो कलर टू यूरिन. Beater canal is present in you. It is present in a frog and where in the testes of a frog. Okay. Glenoid cavity in human is, glenoid cavity in human is pectoral girdle. So जो pectoral girdle है वहाँ पे आपकी कौन सी, तो glenoid cavity होती है. Glenoid cavity is a depression in the scapula. Okay, where the humerus fit shoulder joint. Arbor vitae is a part of, it is a part of cerebellum. Okay. Which of following is not a hereditary disease? So क्रेटिनिज्म जो है वो एक हेरिडिटी डिजीज नहीं है बिकॉज इट इज डेफिशिएंट डिजीज. आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्रेटिनिज्म हो जाता है. ओके, सो इट इज नॉट इनहेरिटेड. हीमोफीलिया, सिस्टिस फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. व्हिच हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड? सो एपिनेफ्रिन इज अ मॉडिफाइड अमीनो एसिड. एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन एंड अमीनो एसिड. ओके. एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड है. प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो लिपिड है. द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज, यू ऑल नो, थैलेमस. Animal give birth to young one. Okay, that is the BB-parus. BB-parus that give the birth to the young one, and oviparous which egg. And ovo-BB-parus internally egg and then hatch inside and give birth to the shark. During microsporogenesis, meiosis occur. जब microspore का formation होगा तो meiosis कहाँ पे होती है? तो it is in the microspore mother cell. Heterotrophic fungi is the saprophyte, symbiote, parasite. All these are heterotrophic. Fungi are heterotrophic. Saprophytic, dead and decay. Parasitic, on living, or symbiotic, on like. A haploid plant produce male or female gamete. That is by a mitosis. Entry of pollen tube into the ovule through a micropyle. अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होता है. तो हमें पूछा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. जब यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है इधर माइक्रोपाइलर एंड से, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इट इज नोन एज अ पोरोगैमी. पोरोगैमी थ्रू मेसोगैमी इज थ्रू इंटेगुमेंट. यहाँ पे आपकी इंटेगुमेंट्स होती हैं, दीज लेयर इंटेगुमेंट होती है इस तरीके से 1 2
ओके, तो यहाँ पे ऐसे इंटेगुमेंट कवरिंग होती है। तो जब अगर इंटेगुमेंट के थ्रू जब एंटर करेगी तो उसको बोल देंगे हम इट इज अ मेसोगामी चेलिसोगामी। यहाँ से आपका चेलिसोगामी आ गया, यहाँ से आपका मेसोगामी आ गया माइक्रोपोलर के एंड के थ्रू पुरोगामी आ गया। ओके, नाइसोगामी इज वन ऑफ डिसिमिलर गैमेट। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड? सो एम्पुला जो है वो मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रा, these are the accessory gland, and ampulla is just a part of vasa deferens, not a gland. Okay, Graafian follicle are found in ovaries of mammal. Uh, oral contraceptives are prescribed in a female to check ovulation को चेक करने के लिए oral contraceptive दी जाती है. Gynecomastia is again breast development होता है. See, in option 3 is Klinefelter syndrome. That is male with a female trait because one extra X, so one extra chromosome, so male have a breast development. Antibodies resemble which of following shape? This is in Y shape. Okay, immunoglobulin has a Y-shaped structure. If the base sequence of a codon is this, the sequence of tRNA pairing with itself is, it will pair adenine will pair with cytosine, US will with adenine, and guanine is with uracil. The cytosine is replaced by uracil. Okay, so here is codon AUZ and complementary CAU. Okay, the coding segment of DNA coding segment is exon. Okay, and the next is initiating force of evolution, that is variation. Initiating force of evolution जो है वो variation है. Variation provide raw material. जो variation है वहीं से ही raw material आता है for the evolution. Which one of following is a living fossil? तो cycas को हम living fossil बोल देते हैं. AIDS is due to, so AIDS is due to the destruction of a helper T cell. Okay, cryopreservation is done in, so it is done as -196. hybrid vigor is क्या यूज करा है, is due to the heterozygosity के कारण hybrid vigor, जिसको हम heterosis भी बोलते हैं. In transgenic expression of transgene in target tissue is in transgenic expression of transgene in target tissue, that is due to the promoter. And inverted pyramid is found in which ecosystem? So it is a feature of the marine ecosystem. Okay, marine ecosystem. Biomass of producer is less. अब देखो कि जो बायोमास है, फाइटोप्लैंक्टन है उनका जो है वो क्या होगा, वो लेस होता है. जबकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लार्ज फिशेज, उनका बायोमास क्या होगा, वो लार्ज होता है. ओके, इकोटोन इज, सो इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन अ टू कम्युनिटी. सी, ओके, which of following is most stable ecosystem? So most stable ecosystem is ocean. Okay, okay, thanks.